Dear friends, today we are going to discuss about anatomy and physiology of skeletal muscle. First syllabus, structure of skeletal muscle, physiology of muscle contraction, names, position, attachment and function of various skeletal muscles, physiology of neuromuscular junction. So what are the different question comes from this chapter? What do you mean by neuromuscular junction? Discuss briefly about physiology of muscle contraction. The long question comes from this chapter in 2016 15 mark long question. Apart from this, in 2015 5 mark short note, that is muscle contraction. So question comes mainly in muscle contraction or physiology of muscle contraction. So first let us discuss about the introduction part of skeletal muscle. Muscular system consists of three different types like cardiac muscle, smooth muscle and skeletal muscle. Also we covered in tissue chapter. Tissue chapter रे पढ़ीथिले smooth muscle, cardiac muscle or smooth muscle tissue, cardiac muscle tissue or skeletal muscle tissue. So three different types of muscles or tissue are present in our body. So skeletal muscle form 40 to 45% of the total body weight. Like blood is 7% of the total body weight or 8% of the total body weight. Similarly, skeletal muscle 40 to 45% of the total body weight. So suppose one person 70 kg, his or her body muscle weight is approximately 28 or 30 kg or 32 kg. The human body has more than 430 pair of skeletal muscle. That means 860 approximately 800 above 800 skeletal muscles present. Most vigorously movement by 80 pair. That means 160 bones are involved continuously or vigorously or involved in the movement. So the skeletal muscle provide strengthening production of the muscle tension and protection for the skeleton or enable bones to move or provide the maintenance of body posture against gravity. So what is the main function, you can say? Skeletal muscle gives or provides strain, protection, moment, maintenance of the body posture against gravity. Apart from this, skeletal muscle perform both dynamic and static work. So what is the dynamic work? Locomotion, positioning. And what is the static work? Maintain the body posture. See, quick recap of the introduction part. कौन कहूची ना muscular system बा आम बॉडी रे तीन प्रकार मसल बा टिश्यू रही हम पढ़ीचु टिश्यू चैप्टर कार्डियक मसल टिश्यू और स्केलेटल मसल टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू तीन प्रकार आज आम पढ़ुचे स्केलेटल मसल टिश्यू विषय बा स्केलेटल मसल सिस्टम विषय कौन स्केलेटल मसल ना आम टोटल बॉडी रो 40 रु 40 रु 45 भाग होची स्केलेटल मसल रे तयारी और स्केलेटल मसल्स रो नंबर जदि गणिबा जेमति 206 बोन सिमिलरली जदि मसल्स गुडा को काउंट रे नबा 430 पेयर रो मसल अछि माने approximately 860 muscles are present in our body, but out of this 860 160 or 80 pair mostly involved or repeatedly involved हेउछन कौन पई ना for movement. So what is the major function of the skeletal muscle? कौन तर कौन पई अछि बा कौन जोगे दिए ना strain. It provides strain, protection, movement, maintenance. So these are the function of skeletal muscle. Apart from this, यह छोड़ा skeletal muscle also perform
डायनेमिक और स्टैटिक वर्क. डायनेमिक मीन्स लोकोमोशन, चला बुला पई हेल्प करे मसल, स्केलेटल मसल. पोजिशनिंग, बॉडी रो पोजिशन, किन छिडा बु कोन करिवु कि जो पोजिशन हम बॉडी रो मूवमेंट बा पोजिशन जो अछि से सब डायनेमिक. और स्टैटिक वर्क कोन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर, मेंटेन करके रख. So with the help of this skeletal muscle, not only locomotion or positioning or maintenance the body posture, but also provides strength, protection, movement of the body. And it contains 430 pair of skeletal muscle. So, and 40 to 45% of the total body weight. So this is all about your introduction part. Now comes to the definition. कौन कौची definition? Now skeletal muscle are voluntary muscle. What is the meaning of voluntary? Controlled by your own with the help of spinal cord and central nervous system. माने हमें जानी पड़ू. Suppose हमें हाथ उठाऊ बा जो स्केलेटल मसल जो जगह रही टोटल बॉडी रो निज इच्छा अनुसार आम कंट्रोल कर परिबा. दैट इज कॉल्ड वॉल्यूंटरी कंट्रोल और वॉल्यूंटरी मसल. मसल गुडा को कंट्रोल होची हम जणा रे जानी कि आम करू सेटा को वॉल्यूंटरी कंट्रोल. सो स्केलेटल मसल्स आर वॉल्यूंटरी मसल व्हिच आर अटैच्ड. कहा सहित अटैच हेकी रही ना बोन ऑफ द स्केलेटन. और बोन कौन कौन पड़ीथिले? एपेंडिकुलर एंड एक्सियल. So total bone रे bone of the skeleton रे ए muscle गुडा को skeletal muscle गुडा को attach हेकी अछि forming the muscle of limbs, abdomen, head, neck, face, eye, diaphragm or and tongue. एवडा तयारी करिया पई साहाय्य होछि. So what is skeletal muscle? It is a voluntary muscle which is attached to the skeletal system or skeleton. So now comes to the macroscopic structure and microscopic structure. केमिति skeletal muscle टा देखिया पई केमिति. Skeletal muscle is comprised a series of muscle fiber made up of muscle cell. देखिए फिगर रे कोन कहूचे? A series of comprised or it is made up of series of muscle fiber. এটা হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক্যাল স্ট্রাকচার. কোন ହେଇଛି ନା ଆମେ ନେଲୁ ଏଇ ମାସଲଟା ହାତର ଏଇ ମାସଲଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ଅଛି ନା ବୋନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି ଟେଣ୍ଡନ. ଟେଣ୍ଡନ ପରେ ସ୍କେଲେଟଲ ମସଲ. ସିଧା ସ୍କେଲେଟଲ ମସଲଟା. ସ୍କେଲେଟଲ ମସଲ କଣ ହେଇଛି ନା it is made up of skeletal muscle cell or skeletal muscle fiber. A skeletal muscle fiber को surrounded by perimysium or it is endomysium also called. And endomysium surrounded by muscle fascicle and muscle fascicle is surrounded by perimysium and perimysium is surrounded by epimysium and finally made up of skeletal muscle. So how skeletal muscle is made up or skeletal muscle is surrounded by ये जो muscle टा skeletal muscle देखाउछ एई मांसटा को बा muscle टा को surrounded हेछि किए surrounded कर रखि epimysium and epimysium see the epimysium तार इनर लाइनिंग एटी ए वाला कोन पेरीमाइसियम. एटा कोन मसल फेसिकल. एटा कोन ना एंडोमाइसियम. तले ए एंडोमाइसियम को एंडोमाइसियम इट इज सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम और स्केलेटल मसल फाइबर सेल याकू के सराउंडेड कर रखछि सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम. Endomysium, then muscle fascicle, then perimysium, then epimysium or
skeletal muscle, it is attached to the tendon. या हिची बुझियला ताले सबुठो स्मॉलेस्ट हला skeletal muscle cell. Skeletal muscle macroscopical structure, again we will go through detail on microscopical structure also. Microscopically भी जीवा. First देखो skeletal muscle. Skeletal muscle surrounded by perimysium, that is endomysium. Again surrounded by muscle fascicle, that is perimysium. Perimysium again surrounded by the epimysium. Then skeletal muscle टाको surrounded करी रखिला ताले epimysium. देखिए कौन कौन ना skeletal muscle is comprised a series of muscle fiber. That is muscle cell. These muscle cell are long and multinucleated. माने nucleus बहुत गुड़ा अछि. More than one, multinucleated. लंबा long. At the end of each skeletal muscle, a tendon connect. कौन connect है जी? Tendon. Bone सहित tendon देखिए जो white color. Tendon connect to the muscle to the bone. The tendon connect directly to the epimysium. Directly connect to the epimysium. ये जो टेंडन गुड़ाक एपिमाइसियम सहित कनेक्ट होती डायरेक्टली कनेक्ट टू द एपिमाइसियम बिकॉज स्केलेटल मसल इज सराउंडेड बाय एपिमाइसियम. कवर करी रखी स्केलेटल मसल टाको एपिमाइसियम ताले ऑब्वियसली एपिमाइसियम टा कहा सहित अटैच हबो टेंडन सहित. So at the end of each skeletal muscle, a tendon connect to the muscle to the bone. This tendon connect directly to the epimysium. Under the epimysium, muscle fiber are grouped into bundle called fascicle, and these fascicle are surrounded by another protective covering called collagen. ये कवर कर रखी collagen. ताले first bone. बोन सहित किए अटैच है टेंडन. टेंडन सहित आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मसल सेल बा मसल टिश्यू बा मसल किए एपिमाइसियम सी कनेक्ट होती रही. एपिमाइसियम मसल फाइबर आर ग्रुप्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड अंडर द एपिमाइसियम. एपिमाइसियम भीतर को कौन अछि बा तळ को कौन अछि फेसिकल्स. And fascicles are surrounded by another protective covering that is collagen out. And the perimysium, as it is called, allow nerve and blood vessel. See the perimysium. Perimysium layer re blood vessel, nerve सब connected. That is perimysium, surrounded by perimysium. That is muscle fascicle. This is the perimysium layer. This is all about your माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर. ताले माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर कौन ना स्केलेटल मसल टाको सीरीज ऑफ मसल फाइबर रे तयारी ताऊ कहे मसल सेल. एगुडा को मल्टी न्यूक्लिएट बहुत न्यूक्लियस थाए गोटे न जंदी गोटे सेल रे गोटे ही न्यूक्लियस मसल सेल रे मल्टी न्यूक्लिएटेड ताको कहला लंबा लॉन्ग एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. और कौन अटैच है बोन सहित टेंडन. टेंडन सहित एपिमाइसियम और एपिमाइसियम ग्रुप ऑफ मसल फाइबर रे तयारी जोडा को कॉल्ड बा तार तळे जो लेयर ता अछि एपिमाइसियम आउटर कवरिंग लेयर रहला जे कि टेंडन सहित अटैच है ता तळ लेयर ता अछि फेसिकल एवं फेसिकल को प्रोटेक्ट करिकि रखुछि कोलाजेन. फाइनली द पेरिमाइसियम अलाउ द ए पेरिमाइसियम जो लेयर रहला से लेयर रे ब्लड वेसल नर्व एगुडा सब रहिले. नाउ देखिबा माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर. आउ फिगरटा देखिबा एटा होची माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर. सेठी कोन हमें देखिथिलु लास्ट द स्केलेटल मसल फाइबर. एटा हला स्केलेटल मसल फाइबर. एटा स्केलेटल मसल फाइबर याकू जदि आमे माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर रे देखिबा देखो मायोफाइब्रिल सेक्रोमेयर सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियन. तले ए जो सेल टा रे एक्टिन मायोसिन फिला माइक्रोफिलामेंट ये जो मसल फाइबर एटा कौन मसल फाइबर सी दिस फिगर
मसल फाइबर स्केलेटल मसल फाइबर और सेल ताले एई जो सेल टाकू जदी हमें माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर रे देखिबा ताले कोन अछि देखो ब्लड वेसल कनेक्ट अछि दैट मीन दीज आर कैपिलरी ब्लड रो कैपिलरी गुडा को सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि माइटोकॉन्ड्रिया अछि मायोफाइब्रिल अछि ट्रांसवर्स ट्यूबुल अछि आउ सेक्रोमेयर अछि दिस इज द माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर आउ थरे मसल फाइबर ता सेल टाको मसल सेल टाको ता भितरे देखो कैपिलरी अछि ब्लड कैपिलरी कनेक्ट अछि बा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि जे कैल्शियम एक्युमुलेशन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा माइटोकॉन्ड्रिया बा मायोफाइब्रिल बा ट्रांसवर्स ट्यूबुल बा सेक्रोमेयर ए जिंस गुडा को अछि कोठी माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल और मसल फाइबर ताले जो सेक्रोलेमा कहली रे सेक्रोमेयर बा सेक्रोलेमा टी ट्यूब्स ट्रांसवर्स ट्यूबुल टी ट्यूब सब अछि कोइछि देखियो डिस्कशन करिया सो सेक्रोलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल हमें जानछु प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताकू मसल सेल रे कोन को आउछि sarcolemma sarcolemma of the muscle cell is highly investigated by transverse tubule that permeate the cell and sarcoplasm or cytoplasm so the plasma membrane gola now comes to the cytoplasm of the muscle cell contain calcium storing sarcoplasmic reticulum specialized endoplasmic reticulum of the muscle cell तापर आसीबा स्ट्रिएटेड मसल सेल आर मल्टीन्यूक्लिएटेड पहिली टिके आगु पढितले जे मसल सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड सो द न्यूक्ली lie along with the periphery of the cell forming swelling visible through the sarcolemma nearly the entire volume of the cell is filled with numerous long myofibril ये जो मसल सेल टाको एंटायरली फुल्ली मेनली फील्ड इची माने भर्ती जो कहा देकी ना मायोफाइब्रिल देखो मायोफाइब्रिल इट इज फिल्ड विथ मायोफाइब्रिल गुडा कौन ना इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट और एक्टिन और मायोसिन ए फिलामेंट देखी मायोफिलामेंट दैट इज एक्टिन और मायोसिन देखो ए मायोफिलामेंट रे फिल्ड इज कोडा नाइ सेल टाको को सेल जो मसल फाइबर सेल तले तार सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहिला बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहिला बा माइटोकॉन्ड्रिया रहिला बा सेक्रोमेयर मायोफाइब्रिल और ट्रांसवर्स ट्यूबुल कोठ रहिला ना मसल फाइबर रे बा मसल सेल रे तेनु आमे तार माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर देखिछे कोन ना सेक्रोलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल को कहा जाय साइटोप्लाज्म कौन ना containing calcium storing sarcoplasmic reticulum striated muscle cell कौन ना multinucleated the nuclei lie along with periphery of the cell forming the swelling visible through the sarcolemma nearly the entire volume of the cell ये जो सेल रो टोटल टा वॉल्यूम देखो मायोफाइब्रिल्स पाइप रे भर्ती पूरा फिल अप मायो फिलामेंट और मायोफाइब्रिल फुल्ली फिला पूरा तार गुच्छा भलिया जो देखा जाउछ एक्टिन आउ मायोसिन कोटा फिल अप कर रखछि ना मसल सेल टाको बा माइक्रो मसल सेल और मसल फाइबर टाको नाउ कम्स टू द मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फिलामेंट गुडा होछि थिन फिलामेंट गुडा होछि थिक फिलामेंट It consists of standard of the globular protein that is actin. Actin is thin filament and myosin is thick filament. Arranged along with the helix of the troponin, tropomyosin molecule. A length of helix along with तासहित जोड़ी ही रही troponin और tropomyosin molecule that cover the special binding side of the actin. Similarly, thick filament is myosin. तले ये जो muscle cell or muscle fiber is made up of
thin filament or thick filament, or actin and myosin. So each myosin filament form protruding head at the end, and the arrangement of the myosin filament possesses a protruding head and number of position of the both end. So see the figure. Z line, H zone, Z line, sarcomere, zone of develop, myosin, actin filament. See the myosin filament. This is actin filament. Outside actin filament. ଆଉ myosin cross bridge କେମିତି troponin ଅଛି, କେମିତି tropomyosin arrange ହେଇଛି, calcium channel binding site କୋଉଟା, ସବୁ will go through detail. So with the myofibril, actin and myosin filament are parallel and arranged side by side. Parallelly arranged ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ ଆମେ କୋଉଠି muscle cell ରେ କିଏ ନା actin ଆଉ myosin. So the overlapping filament produce a repeating pattern that gives skeletal muscle each striated appearance. So each repeating unit of the pattern is called sarcomere. Now କୁହାଉଛି sarcomere. See the figure. Sarcomere. এটা sarcomere. कौन ना एक्टिन आउ मायोसिन रो जो फिलामेंट और अरेंजमेंट है, देन इट इज सेपरेटेड बाय अ बॉर्डर जेड डिस्क. जेड लाइन द्वारा एटा सेपरेट which that actin filament are attached, and myosin filament with their protruding head float between the actin and unattached to Z disc. कौन कहला? See the figure. Now each repeating unit pattern is sarcomere. It is separated by the Z disc. देखो, it is separated by the Z line. It is separated. Z line. It is separated. Then to which actin filament are attached and myosin filament are protruding or float between the actin. Actin गुड़ाक attach ହେଇକି ରହିଥାଏ ଆଉ myosin गुड़ाक floating ତା ଚାରିପାଖେ ଘୁରୁଥିବ, floating myosin. See, myosin these are floating but actin are fixed, and it is thin, this thick filament. तापर आसीबा देखिबा physiology of muscle contraction. Muscle टा केमती contract होची. So skeletal muscle cell contract occur after a release of calcium ion. जत्ते बड़े calcium ion release होची सेते बड़े ही cell टा contract होची from internal storage. जो sarcoplasmic reticulum रहला से internal storage रू release करिवो calcium, which is initiated by the neuronal signal. जत्ते brain बा spinal cord signal दबो सेते बड़े ही synthesis टा को बा रिलीज टाक कैल्शियम रो रिलीज टाक झरिबा आरंभ करिवो कोठु सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ईच स्केलेटल मसल फाइबर इज कंट्रोल्ड बाय मोटर न्यूरॉन व्हिच कंडक्ट द सिग्नल फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल. हेले ब्रेन जते बळे ही सिग्नल दबो गुटे मसल को, सो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड भी दे परियो. सो जत्ते बेले गोटे को न्यूरॉन देकी मोटर न्यूरॉन देकी सिग्नल आसीबो. सपोज मते अंगुली गुडा को क्लोज करिवार अछि, मसल टा को कॉन्ट्रैक्ट करिवार अछि. सो हाउ इट इज पॉसिबल ना जत्ते बेले ब्रेन रु सिग्नल आसीबो, ब्रेन कोन सिग्नल आसीबो, हाथ को क्लोज करो थ्रू मोटर न्यूरॉन. सो मसल्स आर इन्वॉल्व or skeletal fiber are controlled by motor neuron and which conduct signal by the brain and spinal cord to these muscles. So when muscle fiber is activated by the nervous system, the myosin leads attached to the binding side of the thin filament and the sliding begins or contraction starts. So what are the other functions like relax the smooth muscle? In a relaxed muscle cell, how it works? So regulatory protein forming part of the actin filament prevents the myosin binding.
Actin myofilament prevent the myosin binding when an action potential sweep along with the sarcolemma and muscle cell is excited. So calcium ion released from the intracellular storage. So main aim, intracellular release of calcium from the sarcoplasmic reticulum. So contraction trigger also same. The flood of calcium act as a final trigger of the contraction because calcium bind to the regulatory protein of the actin filament. They change both shape and their position of the thin filament. So what is the function of muscle contraction or purpose of the muscle contraction? Relax the muscle cell or contraction trigger or attachment. The physical attachment of myosin or actin spring the trap, causing the myosin leads to snap towards the center of the sarcomere. Because actin and myosin is firmly produced to each other, when this happens, the thin filament are slightly pulled towards the center of the sarcomere. The main purpose of the physiology of muscle contraction, relax the muscle cell, contraction trigger ଆଉ attachment केमती मायोसिन एक्टिन साहाय्य फंक्शन गुड़ा परफॉर्म करके हमें देखिए. नाउ द डिफरेंट मसल्स आर इन्वॉल्व लाइक फ्यूजिफॉर्म बाइसेप is present in the bicep, circular in the orbicular oculi or parallel muscle in the external oblique region or bipinnate, that is rectus or femoris muscle or thin parallel muscle sartorius or quadrate muscle present in the rectus abdominis or tendinous muscle present in the tendinous intersection muscle or convergent muscles is present in pectoralis major. So multipennate muscles also present in deltoid. So these are the different types of muscles present in our skeletal system. Now comes to the physiology of neuromuscular junction. So what is the function of neuromuscular junction? How impulse transmit from one pre-synaptic to post-synaptic? Let us discuss. So skeletal muscle, the control is voluntary or contraction is voluntary. This known by us or with the help of spinal cord and brain it controlled. So electrical signal from the brain through the spinal cord travel through the axon and motor neuron. We have studied in the central nervous chapter. Afferent, efferent, sensory, motor. So whatever the impulse reaches to our target organ from the brain and spinal cord through the motor neuron. Motor neuron साहाय्य से impulse टाको brain रू आसुची target organ पाको. So the axon then branches through the muscle and connect to the individual muscle fiber is called neuromuscular junction. So the folded sarcolemma of the muscle fiber that connect with the neuron is called motor end. ये जो muscle cell टाकू directly connected होची कथा सहित interact with the neuron that folded the sarcolemma increase the surface of the contact with the receptor. So again, physiology of neuromuscular junction. Physiology means function. Neuromuscular junction, neuro गोटे neuron to presynaptic to postsynaptic. कौन होची? Skeletal muscle केमती contraction करची voluntarily. Now electrical impulse from the brain through the spinal cord travels through axon of the motor neuron. जोटा brain रू आसुची target organ को through motor neuron. So the axon then branches through the muscle and connect to the individual muscle fiber through neuromuscular junction. So the folded sarcolemma of the muscle fiber that interact with the neuron is called motor end. And the folded sarcolemma increase the surface area contract called receptor. So receptor का हुआ जाएगा
muscle fiber interact with neuron called motor end plate kahaku kuhajaye. The end plate, end of the branches of the axon are called synaptic terminal and do not actually contact the motor end plate. So a synaptic cleft separates the synaptic terminal from the motor end, but only a few nanometer in size. So this is, see the figure. How action potential? So pathway of action potential. So how the action potential transmitted from one point to another point, or one cell to another cell, surface of the muscle fiber. How it is transmitted through sarcoplasmic reticulum and T-tubules. So sarcomere, T-tubules, microphiles. So actin and myosin. So this is the pathway or physiology of neuromuscular junction. Now how it communicate between the neuron and the muscle through neurotransmitter. So neuronal excitation causes the release of neurotransmitter. When our neurons are activated, immediately neurotransmitter are released from the synaptic terminal into the synaptic cleft, where they can bind to the appropriate receptor on the motor end plate. So the motor end plate holds the sarcolemma called junctional fold that create a large surface area for the neurotransmitter to bind to the receptor. So generally there are many fold of the and investigation to increase the surface area, including junctional fold at the tumor end plate, at the tubules throughout the cell. So the neurotransmitter acetylcholine is released when the action potential travels down the axon of the motor neuron, and resulting alter the permeability of the synaptic terminal and an influx of the calcium into the neuron. So the calcium influx trigger the synaptic vesicle which package the neurotransmitter to bind the synaptic membrane and release the acetylcholine into synaptic cleft by exocytosis process. So this is all about your physiology of neuromuscular junction. देखिबा कौन बुझिले? देखिले फिगर को केमती पाथोपेक्शन पोटेंशियल केमती जाउची, माइक्रोफाइब्रिल केमती एक्टिन आउ मायोसिन को पैरेलल करके रखिची बा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कैल्शियम केमती डिपोजिट होची देखिबा. कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, मसल सेल सहित केमिति होची ना गोटे न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करची. जो न्यूरोट्रांसमीटर की प्री सिनाप्टिक रु पोस्ट सिनाप्टिक को एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स जीवा पई सहायता करितो. So generally there are many fold and investigation increase the surface area, including junctional fold at the motor end plate or at the T-tubules throughout the cell. So the neurotransmitter, that is acetylcholine, is released when the action potential travels down. ताले action केतेबेले acetylcholine secretion होबो केतेबेले neurotransmitter और action potential transmit होबो from presynaptic to postsynaptic ना जेतेबेले acetylcholine released होबो और जेतेबेले action potential travels down सेतेबेले acetylcholine release होबो. Result कोन ना alter the permeability of the synaptic terminal. तार जो permeability टा को change कर दबो. Influx of calcium into the neuron. So the influx trigger the synaptic vesicle which package the neurotransmitter, or transmission of action potential from presynaptic to postsynaptic. So this is all about your skeletal muscle. Thank you for watching this video.